Assalamualaikum miss. Assalamualaikum miss. Are you all beta? Assalamu alaikum. Waalaikumsalam miss. Which was very low. My voice is clear, beta? Yes miss. Okay, beta. Thank you so much. Thank you so much, beta. Okay, how are you all? Very few students are in the class. Fine. Okay, Yes, Mohammed. I'm fine. What about you? Sorry, What I'm about fine. Miss, what about one you? by one, beta. बोलिए मोहम्मद अली अब क्या कह रहे हैं? I am fine. What about you? What about the list? What about you? हाँ, okay. Thank you so much. I'm fine, beta. Thank you. Actually, your voice is not clear, so I can't hear you. I'm fine, beta. Alhamdulillah. And what about you? And what about mock? Today's mock. Are you ready for the mock? Yes. Oh, Yes miss. I just saw it. okay, beta. Miss, Oh, how many forms are there? today, Yes, miss. yes, yes. Today there are three forms, beta, and a very good question, Amna. So हम यहीं से स्टार्ट करते हैं आपके इसी क्वेश्चन से टुडे आई एम गिविंग यू थ्री फॉर्म्स as usual. First form will be about MCQs, and second form true false, and fourth form will be about one word answer. Is it clear? Three Okay, questions miss. will be there, and you have to write down the answer in, as you know, in uppercase. Is it clear? So you have to write down the answer. Remember, this is very important thing बेटा. और इस पे बहुत फोकस करना है. बी फोकस्ड के आप डोंट यूज एनी टाइप ऑफ पंक्चुएशंस एंड जस्ट राइट डाउन द नेम. इज इट क्लियर? Just write down the name. Or what about I asked you, you have to give the only answer in one word and in uppercase. Is it clear? Any other question? No, miss, thank you. Okay, you are welcome, beta. Okay, just after 2 years, our annual exams will start. Yes, Sharoz. Inshallah. Inshallah. 7th क्लास से बहुत सारी उम्मीदें हैं हमें. माशाल्लाह. All the students are good, and you all are doing your best, especially in the MOOCs, and you are regularly attending your classes. Inshallah, you will be passed in with flying colors, as Sharo's written. Okay. Okay, well done beta. जी. तो आज क्या बात की जाए, और क्या चीज़ डिस्कस करने वाली है? कुछ ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आ रही हो? एनीथिंग regarding your exams, regarding your mock, or any topic, any chapter? Yes beta, same वही process होगा रमला. You can see your marks. Is it clear? जैसे जैसे आपको साथ साथ मॉक में शो हो रहे हैं उसी तरह से. In the final, I told you This is in the previous lecture beta, there will be four forms. Is it clear? First okay. MCQ, second true false, third column matching, and fourth one will be one word answer. Is it clear? So be focused towards your two forms, especially you are used to attempt in MTs and CTs MCQs and one word answer as well, MCQs and true false. Is it clear? And one word answer as well. But here some rules are different. Now you are, no beta, no beta, Sharoz, no. Just you have to write down the specific answer in uppercase.
मैं पूरे मार्क्स पता चल जाएंगे या सिर्फ ऑब्जेक्टिव ब्लैंक्स वगैरह के? नहीं तो बेटा सारा पेपर ही ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, हर फॉर्म के ओ पता हाँ, चल जाएंगे। तो पता चल जाएंगे, रिजल्ट बाद में मिलेगा। ऑब्वियसली रिजल्ट तो फिर आप देखिए, योर अटेंडेंस, योर सीटीज, एमटीज, असाइनमेंट्स, एवरीथिंग will be included in the result, and then we will give you the proper result. Is it clear? On the spot, you just can find the specific marks of specific paper. ठीक है, जिस दिन का पेपर मिस होगा क्या जी। मिस क्या होमवर्क के मार्क्स भी ऐड होंगे? ऑब्वियसली। हु इज दिस बेटा? कौन मुझसे क्वेश्चन कर रहा है? Who is asking the questions? Zuhaib? Okay. Just two students are turning on their cameras. और बाकी सब कहाँ हैं भाई? Turn on your cameras, Ali. Okay. आमना, अस्मी, मिस मार्क्स फाइनल टर्म में भी देख देख लेंगे, मतलब सारे सारे सब्जेक्ट्स के। बेटा एक्सप्लेन योर पॉइंट बेटा आमना। I can't understand बेटा। फाइनल टर्म में भी मार्क्स देख लेंगे, जैसे हम जैसे मॉक्स में देख लेते हैं। वही तो बोल रही हूँ, देख लेंगे ना, जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स वहाँ पे आपको शो होते जाएंगे। सेम वही प्रोसेस है बेटा। इज इट क्लियर? बट वही बात है, बहुत a few students are here in the class, so I want to discuss last time all about the marks and rules and regulations, but you all know very well about the marks and all the instructions, but I want to tell you once again, जैसे रमला ने दोबारा से मुझसे ये क्वेश्चन किया कि कितने फॉर्म होंगे, तो अब तो आप सबको याद ही हो गया होगा कि कितने फॉर्म होंगे। ठीक है, 4 फॉर्म्स होंगे, लेकिन बेटा जो सारी ज़रूरी बात है जो मैं सबसे पहले भी बोलना चाह रही थी कि बी फोकस टुवर्ड्स योर कॉलम मैचिंग फॉर्म एंड वन वर्ड आंसर्स फॉर्म। इज इट क्लियर? नो पंक्चुएशंस विल बी देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड वेरी केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस में सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, I have written all the things in the instructions, especially in the instructions of one word answers form. Is it clear? उसमें मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि यू हैव टू follow the all the instructions, like you have to write down the answer in upper case and no punctuations will be there. और इसके साथ साथ मैं आपको मैंने आपको उसकी एग्जांपल्स भी बता दी हैं। ठीक है, कि अपर केस में किस तरह से लिखना है, और फॉर मैनी टाइम्स वी हैव रिटन इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, तो आप सबको पता ही है। यस ऑफ कोर्स शेरोज, आप डे बाय डे उसको कर सकते हैं। आपको जस्ट जैसे आपके एमटीज एंड सीटीज के मार्क्स शो होते थे, बिल्कुल उसी तरह से आपको अपने मार्क्स शो हो जाएंगे। ठीक है, और वो कैलकुलेटेड ही होंगे ना, ऑब्वियसली फॉर्म वाइज होंगे, तो आप अपने फॉर्म के मार्क्स लिखते जाइएगा और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी फॉर्म हैविंग सेपरेट मार्क्स। इज इट क्लियर? तो जैसे आपका एक पूरा फॉर्म एमटी या सीटी का ओपन होता था, नाउ देयर विल बी 4 और 5 और 6, जितने भी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। ठीक है ना, लाइक फॉर एग्जांपल suppose you are attempting the maths paper, you are attempting the paper of 100 marks, then there will be the more forms than SST's form. As compared to SST, I will upload 4 forms, but I think maths के forms ज़्यादा होंगे। Is it clear? And a very important thing which I want to tell you, that I will give you a day before your final term paper, I will upload the total duration of your paper and the duration of each and every form। वो सब आपको जो है वो आपको एक सम अप करके हम आपकी क्लासरूम्स पर अपलोड कर देंगे। जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा, अ डे बिफोर टीचर विल अपलोड द all the breakups. Is it clear?
वो सारा जो है अपलोड कर देंगे. ओके. And everything is okay. मैचिंग Okay. कॉलम जाएगी. बेटा आई प्रैक्टिस यू. मैंने आप सबको प्रैक्टिस करवाई थी कॉलम मैचिंग की. आई हैव गिवन यू मतलब बेटा इन द प्रीवियस मोक. रिमेंबर? वर्ड दे शेरोज, के नीचे उसके साथ क्या होगा? just a minute. Sheroz, do you remember? In last week, I think I have given you, Amna, do you remember, beta? In the last MOOC 1, I have given you the practice of column matching. मैंने आपको column matching की practice करवाई थी? No? Oh, oh. No, miss. अच्छा. And what is included in the previous MOOC? MCQs, true, false, and Miss, one word answer. third form. Miss, Third one word form. answer. लास्ट वीक में भी थर्ड फॉर्म में वन वर्ड आंसर थे. वेट अ मिनट बेटा, आई हैव टू चेक दिस इन माय फोन. मैं भी चेक कर लेती हूँ एक बार. ओके मोहम्मद अली, आई विल टेल यू, डोंट वरी. कोई इतना टफ या इतना कोई डिफ़िकल्ट उसका नहीं होगा. मैं आपको बता देती हूँ. ओके बेटा. ओके शेरोज, थैंक यू. Just a minute. I am searching the mock, previous mock. Okay, beta, if you have any type of question regarding your, you can ask me regarding your syllabus, regarding your mock के बारे में तो आपने मुझसे पूछ लिया. मैं आपको बताती हूँ. Just a minute. Previous mock 1, SST mock 2, and what about the mock 3? Wait a minute, bas beta, I have given you the column matching. I am this is form 3, and I have given you the 8G October 19701. Yes beta, I have given you. Remember, Muhammad Ali, you didn't attempt the mock 1. If you can open your mock, then you can see the form 3. No, Muhammad Ali, because I have given in 8th class also, and in मेरे सामने ये मोक 3 का कॉलम ओपन है, और इसमें मैंने आपको दिया था लाइक सिंध, जैसे मैंने आपको सिंध के बारे में पूछा हुआ है, और ये मोक ही है. यस, मोक 1 क्लास 7 and form 3. Can you check? Okay, Muhammad Ali said that he attempted. Sheroz, आपको याद आया? Amna, did you attempt the mock 1? Do you remember, Sheroz? याद आ गया? Yes, Amna.
Sheroz, tell me beta, turn on your mic beta. Yes, miss. याद आ गया. याद आया? Yes, ओके. miss. अब तो मुझे परेशान आप लोगों ने कर दिया था. Because I have given 8th class in PST. In mock 1, I have given them one word answer, and I have given you the column matching. And then in mock 2, I have given them column matching, and I have given you today like mock 2 questions. सो मैंने ऑल्टरनेट डेज में रखे थे ताकि मुझे याद रहे, इसीलिए मैं परेशान हो गई. Now, once again, I will repeat you with you the previous mock ones column matching. तो अली आपने पूछा ना जैसे मुझसे, तो लाइक आपको जैसे आपसे पूछा गया कि सिंध was conquered, ठीक है. लॉन्ग सेंटेंसेस विल बी इन द वर्टिकल मैनर्स एंड फिर हॉरिजॉन्टल शेप में होंगी आपकी डेट्स वगैरह. इज इट क्लियर? जो डेट्स होंगी. Clear? Then I asked you the question. Mughal emperors lived in the या stayed in summer in Lahore या किस तरह का, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था. हाँ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड, सो द लॉन्ग सेंटेंसेस विल बी इन द वर्टिकल मैनर. Is it clear? And you have the give the answer in the circle shape or square shape. Is it clear? Yes, 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 बेटा. So objective resolution वाला मैंने आपसे पूछा था कि objective resolution was passed and I have given you the date March 1949. Is it clear? Then I have asked you the I think the Liaquat Ali Khan was shoot on, ठीक है, कि उनको कब उनको उनको उनकी डेथ हुई, तो मैंने उनकी डेट ऑफ डेथ जो थी वो पूछी थी. इसी तरह से सिंध के बारे में, मुगल एंड एक और भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका जो कॉलम मैचिंग होगा, कॉलम मैचिंग विल बी इन द 3 पार्ट्स. इज इट क्लियर? आपके फॉर्म में इफ द ज़रूरी नहीं है बेटा, यस शेरोज़, ज़रूरी नहीं है. हो सकता है मैंने ऊपर भी जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन इन 8th क्लास कॉलम मैचिंग, देन आई हैव गिवन देम लोकेशंस. इज इट क्लियर? I have given them locations. Just I have given them the upper Indus plain. अब लॉन्ग सेंटेंस जो है आई हैव आई हैव रिटन द लॉन्ग सेंटेंस इन वर्टिकल मैनर एंड देन मैंने जो टॉप पर लिखा उसमें मैंने लिख दिया है कि इन अपर प्लेन्स, ऊपर मैंने लिख दिया है कि सुलेमान माउंटेन्स. ठीक है. सो इस तरह से, बट आई हैव गिवन यू द पर्सनैलिटीज एंड डेट्स एंड इवेंट्स. इज इट क्लियर? Do you understand my words? No, 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 no. Not in one word. I am talking about column matching. ठीक है? I am talking about column matching. Are you listening, Muhammad Ali and other students who are present in the class, beta? Have you any question? You can ask me, Muhammad Arif, Ramla, are you listening me? Rumesa hai, Saad Kuram, Zuhaib. Beta, listen me very carefully. Is it clear? Listen me very carefully. Uh, I want to sum up the at the end of my class. I want to sum up some important things regarding your final term paper once again. But okay, beta, Shero, thank you. On the behalf of your class, Shero said that we are listening. Okay, Shero, thank you so much. But I want some response. Only Muhammad Ali, Amna and you are giving the response. बाकी तो सब पता नहीं, मुझे ऐसे फिर sometimes feel होता है कि पता नहीं हम दीवार से या कंप्यूटर से बात कर रहे हैं. Okay, thank you so much, beta. And well done to you all that you are all present in the last class and you thought that this is also very important class, and thank you so much. Okay, Amna, thank you so much. So, acha. So I'm going to tell you that if there will be the form of column matching, then I have given you the column matchings in 3 sections. Is it clear?
3 sections. The third form of column matching will be of 3 sections: section A, section B, and section C. Reason is that if we are giving you, if we will give you all the column matchings, like 15 column matchings, total 15 column matchings. If we will give you 15 total matching कॉलम मैचिंग, तो आपका क्या होगा कि वो कॉलम मैचिंग आपके हॉरिजॉन्टल जो हैं वो बहुत लेंथी हो जाएंगे, आपकी स्क्रीन पर पूरे शेयर नहीं होंगे. इज इट क्लियर? Then we have given 5 column matching in A section, then in B section 5 column matching, and in C section 5 column matching. There are total 15 column matchings having 15 marks. Is it clear? So total marks of your paper will be 75 marks. ठीक है, 75 मार्क्स होंगे. एंड वी हैव गिवन मच टाइम टू यू to attempt your paper. Don't you worry. Your paper will be start at sharp 8:30 a.m. ठीक है. And we have given you a specific duration according your length of a form. ठीक है, उससे ऑलमोस्ट डबल आपको मिल रहा है. ठीक है, टाइम. And after the restriction of one form, there will be the gap of 5 minutes. Is it clear? Then we will upload the next form. So SST's paper having 4 forms, and I told you that first form will be about MCQs. वो तो आप used to हैं, उसमें मुझे कुछ ऐसा explain मैंने बहुत बार कर भी दिया. Second form true false, and third form column matching. ठीक है. And remember, अब जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये देखिए. आई वॉन्ट टू शेयर यू समथिंग. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जैसे डेट्स हैं, यू हैव टू लर्न ऑल द इम्पोर्टेंट डेट्स and events very carefully, and you all know about that where these dates and events, almost 2 chapters are full of the dates and events and names. Is it clear? So don't miss this thing that you thought that if I have I have given you in the home assignments and homeworks just the few of the personalities. Is it clear? There are some exercises, there are some exercise B or C in of some chapters in which I have given you in the home assignments the identify the personalities, and only 5 or 6 personalities and identification of these personalities are there in your copy. But remember, there are most of the personalities which are present in your book. Is it clear? So take your time, and you have time to underline these important personalities. और ज़रूरी नहीं है कि मैं specific जैसे गवर्नर जनरल हैं और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्राइम मिनिस्टर, ऐसी पर्सनैलिटीज़ भी हों. Keenly look at your chapters in your book, especially the chapter of history of provinces of Pakistan and Pakistan since 1947. ठीक है. In these 2 chapters there are so many personalities, there are so many dates and events. Is it clear? So keenly observe and keenly learn the names and identification of these personalities. Is it clear? समझ में आ रहा है आपको? So I have given you the dates, and there are also the dates and identification of personalities. These questions are like that about the dates and the identification of personalities in your paper. Might be possible these questions will be in the shape of MCQs or in column matching. Is it clear? So this is all about the form 3. Now in form 4, as I told you, the form 4 is about one word answer, and every there are, I think, there are the one word answers or questions having 2 marks. Each question will be having 2 marks. Is it clear? MCQs having 1 mark, true false having 1 mark, and then column matching having 1 mark. But questions
will be having 2 marks. Is it clear? Inshallah, Shahroz and Ramla, inshallah. Don't you worry, beta. Just read your questions, long questions, short questions very keenly, and underline the important lines, important events where you may see any type of date and any type of your any personality. You have to underline these lines. Is it clear? And especially I told you that the important dates and events, all the dates and events are in the chapter Pakistan since 1947 and history of provinces of Pakistan. Okay, Afra, is it clear? So ये दोनों चैप्टर तो इस तरह से हैं और बाकी फिजिकल फीचर्स एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड the in the physical features of the world, you know that the continents are most important topics. Is it clear? So the continent of Asia, Africa, and the continent third one is Europe and Australia. Most important continents. Saad Khurram, behave yourself. If you are not interested in listening these important things, you may leave the class. Is it clear, beta? So read very carefully these lines, especially you can see you can open any type of any of my revision lecture and which lines I have added in my slides. You can underline these lines especially. Is it clear? All the topics are most important, but you can see that the most important things are there. So, and I have also underlined all the important lines in to you in the classes also. Is it clear? In your physical classes, in your virtual classes. So, beta, at 12:30, your mock will be started. Then after 5 minutes, I will sum up the class, and you have to 5 minutes to for your relaxation, and then after 5 minutes at 12:30 sharp I will upload the form 1. Is it clear? So last 5 minutes of this year's last session, so you can say, you can ask anything to me, and I will hear with you, and I will tell you, I will explain you anything. You can ask me. Okay, if you have no question, okay. ओके बेटा, एक तो ये आपका चैप्टर है, सेकंड वन इज क्लाइमेट वाला है. क्लाइमेट को बहुत गौर से देखिएगा. ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इज इट क्लियर? And one thing, a very few students are here, but I uh, often seen a mistake. Most of the students have कमिटेड दिस मिस्टेक बेटा. वो ये है कि देखिए, द आर्कटिक ओशियन, ठीक है, द एंटार्क्टिक. एंड इफ हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ आई एम आस्किंग इन द question, in one word question about the oceans or anything, and I added in my question like ocean, the word of ocean. Is it clear? Then you have just written the Indian Pacific. Don't write the, ठीक है, don't write ocean. Is it clear? Just write down one word answer, and the one word answer will be Atlantic, Indian, Arctic, Antarctic. Is it clear? Pacific. Very keenly you have to attempt your paper very keenly, very be attentive to your paper,
and time management is very necessary. Time management is very, very important. Is it clear? So these two topics are most important topics, especially the ocean currents, and underline all the important lines of and learn all the important lines of ocean current. बेटा एक चीज़ और भी बहुत अच्छे से आप अगर लर्न करना चाहें, you have to learn, you have to read your all the long and short questions very keenly. If you will read all the and read your book very attentively, but if you at the end of after your preparation, if you will learn or if you will read your questions, then you can learn all the important lines through your long and short questions. गॉट इट? आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब आप सारी प्रिपरेशन के बाद आपको लगे कि हमने प्रिपरेशन कर ली है, तो आप उसके बाद क्या करेंगे? यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रीड योर लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस वंस अगेन. उससे क्या होगा? ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस विल बी देयर, all the most important points will be included, and all the most important points are included in the short and long questions. Is it clear? Okay. Okay, beta. Okay, beta. That's all for today. Best of luck for your today's mock. Best of luck for your final term. For all the papers, and my prayers are with you all. And best of luck once again. और बहुत अच्छा आप सबके साथ पूरा साल गुजरा जैसे भी गुजरा. और thank you so much for being with us, being with me in the last class. Uh, okay, take care. Allah Hafiz, and be attentive in your mock, and wait for the next mock. Don't ask me, miss, where is the mock? Second form, second form. Be attentive there. Is it clear? Okay, beta. Allah Hafiz, take care. Laugh is thank you, Miss Thank you. Love you, miss.